Hallo, dit is Wandana van Amsterdam. Blijf kijken naar Eurospice op jouw tv. And welcome to another show of Eurospice, and we're today again in Eurospice in, I don't know, what seems to be like Berlin, or is it Paris, or is it Trafalgar Square, Chico? I see lions and a column. Prague, you're totally wrong. We're not in Paris, we're not in Germany, we are not in UK. We are here in a multicultural capital of Holland, Amsterdam, the exciting city. Heel leuk dat jullie kijken naar deze aflevering van Eurospice. Blijf kijken, want we hebben heel veel aan jullie te laten zien. No, this cannot be Amsterdam. Look, there's Madame Tussauds. Please tell me where we are, Chiku. Really? This is Amsterdam, Prague. What time did you go to bed? I didn't go to bed. This is the problem because That's why you're forgetting. Partying. That's why you're forgetting. This is really Amsterdam. This is a very famous square here called Dam Square. It has a lot to offer, like the Queen's Palace is here. And behind us, you can see the National Monument. And lots of tourists here just relaxing and partying around. Partying. Now that seems like an interesting thing to do because this is what I want to do. I want to get down and party. So tell me, when are we going to party? We're going to party all day and night because this is Amsterdam. Well, I think then, without further ado, we should get the show on the road and get moving and see the rest of Amsterdam. Hello, what's your name? My name हफीजुन्निसा। और आपका नाम क्या है? I'm Prana. आप कहाँ से आए हैं? मैं कनाडा से आई हूँ। Have you come on holiday? जी मैं यहाँ मेरे बेटा और ये बच्चे सब हैं उनके पास आई, ये प्रोग्राम हुआ, मैंने कहा मैं ज़रूर देखूँगी। और आपको हॉलैंड कैसा लगा? बहुत अच्छा, मैं पहले भी आ चुकी हूँ यहाँ। हाँ। कहाँ पर आए थे आप? रोटरडैम के कोई और भी शहर? में भी है, बर्जगम भी है मेरा यहाँ ठिकाना। मैं उधर कनाडा में मॉन्ट्रियल में रहती हूँ और मेरे बच्चे हैं शिकागो में हैं, अमेरिका में, सब मेरे। तो आपको हॉलैंड, कनाडा और अमेरिका से कैसे अलग लगा? मुझे हॉलैंड ज़्यादा पसंद है। क्यों? बस यहाँ बच्चे मेरे सब हैं मेरे बेटे हैं, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। और आपको डच लैंग्वेज आती है थोड़ी सी? डच नहीं, बस ये बच्चे सब बोल लेते हैं। What do you like about to live in Holland? What do you like the most to live here in Holland? I don't like it in Holland. I want to go to Bollywood. I want to go to India. I want to live there. Okay, so you don't like Holland? Not at all. No? But why do you want to go to India? What is so fascinating about India? Well, Bollywood is there, and there are more Indians there, you know. We don't have any Indians in Holland. So I just love to go to India. I want to live there. देखिए, मैं तो वहाँ पर जाकर बिल्कुल सच्चाई बताता हूँ यहाँ की, और बताता हूँ कि मतलब आप लोग ना घर से अपना कदम उठाएं यहाँ के लिए। हमने तो उठा ही लिया, मगर आप लोग अपने ही देश में रहें, वहीं पर चाहे जो भी रूखा सूखा खा रहे हैं उसी में गुजारा करें तो बहुत अच्छा है। क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा हमेशा यहाँ पर आदमी मानसिकता से ना हमेशा मतलब परेशान रहता है, चाहे पैसा हो जेब में चाहे ना हो, तब भी हमेशा रहता है। वहाँ पर कम से कम ये तो है कि
अपने परिवार में हैं और जैसे भी रह रहे हैं, रूखी सूखी खा रहे हैं, मगर आराम से अपने प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। मतलब पाकिस्तान में ये बात है कि पाकिस्तान में जो लोग हैं वो समझते हैं कि यहाँ पर पैसे दरख्तों से लगे हुए हैं, तो वो सब यहाँ आना चाहते हैं और समझते हैं कि ऐसे ही पैसे मिल जाते हैं, जबकि यहाँ आके पैसे कमाना काफ़ी मुश्किल है। नहीं आने के लिए मुश्किल है, लेकिन जो अब यहाँ से जहाँ पर रह रहे हो, कारोबार अपना हो, तो वो मुश्किल नहीं है। यहाँ पर एक तो ये है कि सोशल सिस्टम है, दिन दिन काम करो, काम होता है, उसके बाद सोशल सिस्टम मिलता है, मतलब आदमी भूखा नहीं रहता। और बाकी दूसरे मुल्कों में ये है कि सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, जर्मनी में भी नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है, इसलिए हालत को मैं बेहतर समझता हूँ। मैंने 12-13 साल काम किया, उसके बाद छोड़ दिया, अब फारिग हूँ मैं, लेकिन सोशल मिल रही है। हॉलैंड बहुत अच्छा शहर है, बहुत अच्छा मुल्क है और मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ यहाँ के लोगों से, अपने घर से। और मैं क्रिश्चियन हूँ और यहाँ का मतलब हर चीज़ जो है वो बहुत अच्छी लगती है। जो तुमने चढ़ाया पी है तुमने दारू, प्यार तुमसे दिल मांगेगी अब तोरी मेहरारू। साजन बोले सजनी बोले, साजन बोले सजनी बोले, कौन सी दुनिया मांगे, दो पैसे मिट्टी क्या मालूम जो तू दिल ना हारे। तू आजा उल्ला का दरवाजा आजा, आई सब न देख बबुआ, अरे आई सब न देख बबुआ, कहीं नीयत फिसल न जाए, ऐसा न देख बबुआ, कहीं नीयत फिसल न जाए, लड़की फंसा ले बबुआ। बलिहारी जाऊं लिपट तुम्हारे सैया, अरे मैं तारी बलिहारी जाऊं लिपट तुम्हारे सैया, तू जो मुझे हंसते बोले दे तू बिन तुम्मा, दिल में दर्द उठा गोरी, दिल में दर्द उठा गोरी, किसका नाम जवानी, नादानी में हम जो कर ले थोड़ी सी नादानी। अरे अरे तू क्या रे अपने होश मारे, अरे मौका उठा ले बबुआ, अरे मौका उठा ले बबुआ, ये कहीं लड़की निकल न जाए, मौका उठा ले बबुआ, ये कहीं लड़की निकल न जाए, लड़की फंसा ले बबुआ। Keep watching Eurospice. Hi, Prague. Hi Chiku, how are you? I'm fine. You're singing a very nice song. Yeah, I'm really having a nice time here in Amsterdam. Really, so you're enjoying yourself. The weather is beautiful, the people are brilliant. beautiful, and the parties are just hot and spicy. Very nice to hear that you're enjoying Amsterdam. I hope you guys are also enjoying Amsterdam with us in Eurospice. Absolutely, we're having the time of our lives. Yes, you better bet. And what were you doing right now? Kabouter,
Rob, wait. I think you have to say ja ja because we're going to go for a short break. We're going for a short Yes. break? Okay, in that case, don't go away. Join us soon. We'll be back. Sing along. Kabooter ja, ja, ja. Kabooter ja, ja, ja. Kabooter ja, ja. Today we're here in Eurospice in Rotterdam, and I'm with some local community members, local Asian community members, and they've just been discussing the issue of languages and the new generations, the younger generation. So I'd like to speak to a few of the members here. आप हमारे देखने वालों को बताना चाहेंगे कि यहाँ पे एशियन कम्युनिटी में लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम्स हैं और कैसी प्रॉब्लम्स हैं? प्रॉब्लम तो बहुत है क्योंकि हम लोग यहाँ पे डच भाषा सीखते हैं, स्कूल में बच्चे डच भाषा सीखते हैं और वो अपनी भाषा को भूल जाते हैं, वो हिंदी भूल जाते हैं, सुरनामी हम लोग बहुत बोलते हैं वो भी भूले हैं। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ पर लोकल स्कूल बनाते हैं जिसमें हिंदी लेसन हम लोग देते हैं, तो भी कोशिश करते हैं कि इस तरह उन लोगों के थोड़ा से अपना भाषा को पढ़ाए। There is a big problem with the new generation which are here in this country right now. They can't speak Hindi, they can't seem to speak Dutch on a normal way. The most of the time what they speak is Suriname, and that's it. They can't speak Dutch, they can't speak Hindi. यहाँ पर हम लोग ट्राई करते हैं कि जो यहाँ के लोकल यहाँ पर खमीत के आदमी लोग जो है ना, तो उससे हम लोग दिखाना चाहते हैं कि हम लोग जो लड़के के पेरेंट्स है यंग जनरेशन का, कि मेरा बच्चा हिंदी ये प्राइमरी स्कूल में भी सीख सके। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर सब कुछ तैयारियां कर रहे हैं, उसे 10 जून को बातचीत करने के लिए, और जब वो ठीक होगा तो हम सबका बच्चे जो है जो माता पिता नहीं दे सकते हैं हिंदी पढ़ने के, तो वो यहाँ के स्कूल में प्राइमरी स्कूल में वो सीख सकते, उसको मौका मिल जाएगा। लेकिन जो भाषा जो हम लोग अपने बच्चे के देने चाहते हैं वो पेरेंट्स से होना चाहिए, वो माता पिता ने उसको बताना चाहिए कि आप लोगों को चाहिए हिंदी बोलने के, घर में चाहे भी हो हिंदी कुछ बोलने का। जब वो लोग सिर्फ डच भाषा में बात करेंगे या इंग्लिश में बात करेंगे तो हम लोग वो भाषा के भूल जाएंगे। My mother gave the tongue with me. She learned me how to speak Dutch, she learned me how to speak English, and my father teach me everything about Hindi. And my mother was sending me to schools to learn these things, but other moms are sending their children to learn something, but the children don't want to go there. I mean, for example, they send the children to learn classical dances, and the child goes there and she leaves the building and she comes back at a time her mother is telling her that she'll get her up. Okay, parents are sending the children, so children are only learning what they want. Classical dancing, this is Indian classical dancing. What sort of classical dancing is it? You've got teachers from India or people here? It's people from India who come over to teach them like Kathak or Bharatnatyam in different styles. And you've got people, Suriname people who went to India, who learned the things and who came back. Right. But so do you actually get to use these arts, these talents in Holland? Are you able to put them on stage? Are you able to show the people? Yes, there are a lot of things which are getting organized here in Holland, like melas, milans, dancing nights. And at that time you can go to them and you can offer yourself, or they give you a call, like, do you feel like giving us a perform from your side? And
So there is an opportunity if you know how to handle it, and if you know how to dance, if you've got a talent in you. There are a lot of ways in the Hindustani culture around here to exploit it, but people don't want to do it. और आप बताइए कि आप मतलब यहाँ पे कितने इंटीग्रेटेड हैं जो लोकल्स के साथ? आप भी जाते हैं नाइट क्लब्स वगैरह में, या आपकी इंडियन लाइफ है यहाँ पे? लेकिन इंडियन लाइफ यहाँ पे है, लेकिन हम लोग के लैंग्वेज कमती हिंदुस्तानी जो लड़कन जो है जो समझ पावे वो, लेकिन हम लोग ट्राई करी लो कि लड़कन के एजुकेट करे के हम लोग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव आवर ओन कल्चर, यू नो, otherwise we will lose our culture and it will be very bad for all. My mother doesn't speak that much Hindi also, so I think this what we are doing here in Holland. I think it's very good because he has to know that he is in Hindustan, he's Hindi, and his language we have to do. I think he has to do something on his language because I can teach him. I can't talk Hindi very well. Okay, so you are here in the schools and you are learning in the school here. Which language do you speak at home? At home, Hollands. You are speaking the Dutch language at home. And are you interested to learn your own Hindi language? Yes. So don't you believe then it is important that we teach the children to read and write as well now? We have to, otherwise there will be no culture, Indian culture left in Holland. Okay. There will be Indians but no culture, and you will recognize me on the street as Indian, but what is an Indian? It's time for our Eurospice profile, and we have today a very talented gentleman who is glittering away. Would you like to tell the viewers, please, what your name is? My name is Baladin. And what sort of work do you do? I am an entertainer. I am giving shows of. I'm giving tropical events, Caribbean events. Something from Soca Paradise and for certain people here in Holland. Okay, and today you've arranged a very special function here with must be thousands of people. Well, can you tell the audience, please, what it is? The name of the party is Copacabana Fun Party. I have organized this party for more than 10 years. The first time was with how we call his name, Kumar Sanu. The second time was again with Kumar Sanu from India. The third time was with Salman Khan from India, actor. And after that I have taken some stars from Holland, local stars, Dutch stars, and now I am doing now with local bands because I don't need stars from outside anymore because it's very popular party now. That's why I'm doing now with local bands. Can you tell us why do you do this function? What is the purpose behind it? It's my hobby. I have started when I was 12 years old, and I'm now 30 years old. And I have done this because I was starting to dance, break dance on streets, and they are giving me, when I was dancing, they was giving me, throwing me money, 1 guilder, 2 guilder, sometimes 10 guilders. And I have collect all the money, put it on the bank. And one time I thought, why don't I do a dance competition with some stars from break dancers? And I have took my money, make some leaflets, put the prize on 1,000 guilders, first prize. I have organized it in a hall named Hooiberg in Holland. I have the entry of 10 guilders. Well, I get something of 40 members, break dancers, and my entry was 10 guilder. I had 800 people, young people, and that time I make a lot of money, and from that day till now I'm giving dance events.
and making lots of money. I'm not gonna lie. Yes, I have made a lot of money, but sometimes you lose something and sometimes you make something. Today it's a very successful party, so I have made something. Okay, so up to now you've just done the shows in Holland. Have you ever thought of going international or coming to Wembley like the brothers who do the Bollywood shows? Well, I want to do something in Suriname, but if you ask me to do something like Bollywood with Mr. Hussain and Mr. Murani, Karim Murani, they are bigger than me. I can no. But do you think you're on your way there after having done for 10 years? Not? Yes. I like to do some shows like that, but to bring a show what Mr. Hussain is doing and Mr. Murani is doing, is for me too big. I can't pay that money. It's too much for me. Okay, so is this now your full-time job, or are you doing anything else as well? I have an advertising agency. I'm doing I have some more than 100 shops. They're doing advertising, and they are. I have some clients where I make my program books, and they make advertising in it. That's my work. So basically, you're a very successful businessman in Holland, and doing very well for yourself, and you're shining away there. So we'd like to thank you very much for talking to us, and wish you all the success. Thank you very much. You are watching Eurospice. ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, I love my India, I love my India, वतन मेरा इंडिया, सजन मेरा इंडिया। आ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। प्यारी सी एक लड़की सपनों में कल आई, प्यारी सी एक लड़की सपनों में कल आई, जिंदगी हूँ मैं तेरी कहकर मुझसे शर्माई, हर खुशी हूँ तेरी कहकर वो शर्माई। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, सुन जरा सुन क्या कहती है दीवाने दिल की धड़कन, तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा हीरो नंबर 1। मुझे छोड़ के परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के परदेसी जाना नहीं, परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा, वादा निभाना तुम याद रखना, कहीं भूल न जाना। परदेसी जाना नहीं, तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा, दुनिया में दोबारा हमें आना पड़ेगा, दुनिया में दोबारा। क्या बुरा किया है हुजूर मैंने,
ये थोड़ी सी पीना खफा हो गया, जमाने ने मुझको खफा हो गया, ये क्या क्या मैंने कसूर क्या है, क्या बुरा किया है हुजूर मैंने। समुंदर पास तेरे पीछे पीछे आगे तो तेरे पीछे पीछे आगे के पास के पीछे आ गई ता समुंदर। क्यों जिंदगी की राह पे मजबूर हो गए, इतने हुए करीब के हम दूर हो गए। क्यों जिंदगी की राह पे मजबूर हो गए। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। मस्ती चरी तो क्या मेरे दुनिया तो क्या तारा रा रा रे तारे ना रे तारा रा रा रे रा सदना लेंगे अश्करोगे सदना अश्करोगे सदना आई सदना। Where is Prague? What are you doing? Hey Prague, where have you been? Where I've been having a good time. How can you not come to Amsterdam and have a good time? I understand that you're having a good time, but I was looking for you. I was so worried. Where were you? What were you doing? Why? What's so important? I've been out there, I've been meeting people, I've been seeing things, and I have been partying all night long. Wow, that sounds very exciting, but still, Prague, I mean, I was here waiting for you, and you didn't even call me, you didn't even come to me. Why? What's the problem? Because we have to end this program. Which program? Prague program Eurospice. Eurospice, of course. Okay, so get on with it. Okay, I will. Dames en heren, jongens en meisjes, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze programma Eurospice. Bedankt voor het kijken en heel gauw tot ziens. Did you get that? Well, it's all double Dutch to me, but I'd just like to say that we hope you had a good time watching this program, and we'll be back with Eurospice again. So until next time. हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रोग्राम यूरोस्पाइस का पसंद आया होगा। आपके साथ फिर जल्दी मुलाकात होगी। यूरोस्पाइस को देखना ना भूलिएगा। Until then, it's Kidda from Chiku and Kidda from Prague.